और G7 को कवर करने के लिए इटली पहुंची हमारी टीम की हेड सपना चारण ने वहां मौजूद पत्रकारों से खास बातचीत की। इस बातचीत में क्या कुछ खास रहा, आपको सुनाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ G7 को कवर करने के लिए इटली पहुंच चुके हैं। हम यहाँ मेन वेन्यू पे मौजूद है, जहाँ पर सामने ही ब्रगेलिया रिजॉर्ट है, जहाँ पर सारी मीटिंग्स हो रही हैं। हम इसके जस्ट सामने, जहाँ पर मीडिया के लिए सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। मीडिया कॉन्फ्रेंस रूम यहाँ पर है और यहाँ से ही सारे मीटिंग्स होनी है, यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस होनी है। और उसके जस्ट सामने ही वो रिसोर्ट है, जहाँ पर सारे देशों के लोग मौजूद रहेंगे और यहाँ पर वो सारा मीडिया मौजूद है जो G7 को कवर करने के लिए सभी देशों से आया है और सब अलग अलग देश के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं और आपको मैं बता दूं कि G7 की जो मीटिंग है इस समय शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जो कि अभी मीटिंग के स्थान पर मौजूद हैं, जिस वेन्यू पे सारी मीटिंग हो रही है। और सभी देशों के लोग जो कि G7 का पार्ट हैं वो सब पहुंच चुके हैं। और हम जैसे कि आप देख सकते हैं, सारे जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग कोशिश करेंगे एक जर्नलिस्ट से बात करने की। What's your name? Alessia Peretti. From where you are? I'm from Italy and I work as an Italian correspondent for Euractiv. Can I ask you a question about G7? G7 is a very big platform. Here all the journalists are coming from all the countries which are involved in the G7. And also India is not a part of G7, but still India is invited. But can you please tell me about G7 and the arrangements about the G7? Okay, perfect. So, well, India was invited because it's a crucial country in the world, even though it's not part of the G7 like, the other countries. So India will be crucial for the actual arrangements that, the leaders will take. For example, on Africa, how to do a better partnership to help develop that country and still help other countries of the G7 and India and all the other ones that are invited today. And also there are other arrangements, for example, on Ukraine to give further aid to the country and to use the money that they can take from the frozen Russian assets, even though they're not seizing them, they're just using them, as collateral. And so India will be crucial for this development, even considering the fact that India has a great relationship with Italy, the host of this G7. As it is a very big program, G7, it's a World Forum program. Many countries are invited already. If I ask about the arrangements in Italy, how's the arrangements for everybody, like all the delegations and foreign medias as well? Well, it's really big event and it's been organized for a while. The arrangements are not great as for journalists to get to the places and get access to the leaders, because we're 1 hour away from the actual leaders and the delegations, usually because they're back in Bari, and it takes about an hour to get here. But apart from that, this area is really well secured and we had to pass lots of security checkpoints to get here. So I think the arrangements were really good, but not so well organized, if that was a question. And the one other question also, the last question is, what do you think about the G7 impact after this G7 meetings? What will be the further impact of this G7 Italy? Well, for Italy or all the G7? Okay. So, well, big steps have been taken at the G7. I mean, they're not officially taken yet, but the Prime Minister of Italy, Meloni, announced yesterday that there is already an agreement between all the parts of the G7. So I think that will be really important for especially countries like Ukraine, that they will get further help, and also for the people from Gaza, because they're asking Israel to
stop the assault in Gaza. And so I think there will be really big steps with really big repercussions, especially for countries that are at war now. थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि आपने सुना और देखा कि हम बताया हमें एक जर्नलिस्ट ने कि किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं इटली में। हालांकि उन्होंने बताया कि इटली में जर्नलिस्ट के लिए उतने खास अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से है, क्योंकि देश भर के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, इसलिए जर्नलिस्ट को भी बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं दिए गए हैं। बहुत ज्यादा सिक्योरिटी क्रॉस करके हम लोग को जाना पड़ रहा है, लेकिन इसका वर्ल्ड फोरम पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। तो G7 इटली को कवर करने के लिए हम यहाँ पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पहले से मौजूद हैं और यहाँ की प्रधानमंत्री मेलोनी से वो मिल चुके हैं। वहां पर कुछ जर्नलिस्ट को उन्होंने बुलाया था, जिनसे उन्होंने मुलाकात की और उनसे मिले, हाथ मिलाया। उस मीटिंग में जो लोग मौजूद थे, हमारे साथ यहाँ इटली के एक जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हाय, व्हाट्स योर नेम? Michele Traversa. I come from Italy and I'm here also for G7. You're covering the G7. Will you please tell me about the G7 and the meeting? You were there already. The Prime Minister Narendra Modi is also there and the other delegations are also there. The most famous appointment for today is the meeting with the Pope. For us, it is the first time in the world that in a meeting, political meeting, arrived the religion representative. And for the Prime Minister from Italy is the best in the Apulia is the best way to relationship other country and other people that decide all in the world. Being a journalist, as you are journalist, you are already there and you have a lot of information, so that we are talking to you on our channel. I wanted to ask, Italy is a big country. Why they choose the Apulia especially for the G7? I think that Apulia is famous because the weather is good, food is good, and also have a meeting for a different country, because in the south there are in front of Turkey, Albania, Mediterranean area, so is the point of meeting different culture. It's very important for us because here we have, for example, in Bari there is Saint Nicholas, is the saint famous in all the world, and we have a big church, and in every country arrive people from different nation for pray and also for know different culture. Yeah, right. Can you please tell me about the major points of the meeting, if you know about the G7, what they are going to meeting and what they were talking about the meeting? I think it's important because yesterday and today are write a document important for the peace in the world. Also, because I've talked about Russia and Ukraine, and also the conflict about in Arabia with Israel and Palestine is important. But the most famous document is the for Prime Minister in Italy is Giorgia Meloni. Is important because meet the a right way for develop the economy. Being a very old and senior journalist, I just wanted to ask about your opinion. What will be the impact of G7 after this whole meetings? I think the impact is very, very, very important because all world now have the attention in this area. So it's important for business, for economy, for tourism, and other way. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस विद अस। तो हम लोगों ने देखा कि हमने जर्नलिस्ट से बात की जो कि यहाँ के जर्नलिस्ट हैं, इटली के जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने हमें यहाँ के बारे में बहुत कुछ बताया और जिस तरह से मीटिंग में जो खास मुद्दे रहेंगे उन पॉइंट्स के बारे में उन्होंने हमें बताया। मैं अपनी पूरी टीम के साथ इटली से सपना चारण।